Good evening, everyone. And today we are back again with our real estate expert, Vipul. Vipul has been in real estate industry for decade now, more than a decade, and especially in the NCR region. And the topic today is very relevant to all those who are uh, interested in investment in the NCR region. That is Noida versus Gurgaon. What is a better real estate investment? तो विपुल इसका कोई सीधा सीधा जवाब है कि हाँ सर, बिल्कुल डेटाबेस एंड सीधा जवाब है। अच्छा मतलब यू आर गोइंग टू बैक अप द आर्गुमेंट विद डेटा राइट हाँ हाँ सर, नो ब्लफिंग, नो फ्लफिंग, नथिंग। so that is something which is so there is no uh, objectivity, it's all clear cut data based. So Vipul, let's come straight to the point since we had little delay. uh, Prima facie comparison of Gurgaon versus Noida, Sir, how would you do that? I'll do two slides for that basic comparison, and that basic comparison is not a recommendation; it is a factual comparison, or rather to say, the way I look at these two places. Right. So I just noted down certain points. Right. So Gurgaon, the first table is Gurgaon, the second is Noida. Okay. In terms of law and order, it's almost self-explanatory. In terms of law and order, Gurgaon can do better, definitely. The police density is far less as compared to the way the city has grown. So is Noida. Uh, Infrastructure-wise, metro is still not as. I mean, the reach of metro is much more in Noida for the present population. Roads need a lot of improvement in Gurgaon, not so much in Noida. Okay for now. Streetlights need a lot of working in Gurgaon. Noida has that okay for now. Sewage needs a lot of improvement in Gurgaon. There are a lot of societies where it's not there. Noida definitely has an upper hand there. Water again is mostly own provision. In Noida, it is supplied from Ganga Barrage, uh, and that's how Noida is supplied for water. It's not Yamuna water; it is Ganga water in Noida. In Electricity sorry, Ganga water in Noida, sir. Acha, it is not Yamuna water. No, it is Ganga water, sir. Oh, It is Ganga water. Somewhere near Meerut के पास से they lift it and bring it to Noida. okay. And electricity again needs improvement in both the places. So this is the most basic tabular comparison. Then if you talk about employment opportunities, Gurgaon has a better concentration as of today of service sector and manufacturing. So yes, obviously, Gurgaon has a more developed employment option both in manufacturing as well as the service and tertiary sector. In future, Gurgaon attracts a lot of new businesses because of its existing corporate setup in manufacturing as well as Gurgaon. I mean, manufacturing as well as services sector in both in both the areas as compared to Noida. But Noida is fast catching up. Noida is fast catching up. So Noida is not totally out of league. They are now developing their corporate. They are gaining a lot of mass in their corporate. Right. Yes, Noida is catching up. So I would say that if you ask me on two items, then Gurgaon has an edge in terms of the employment opportunities to start with, and Noida has better infrastructure and better quality of life. They have more green cover. They have more developed roads, street lights, water, etc. What about the security?
सेम एट पार से। ये एक थोड़ा ओवरब्लोन फैक्ट है कि कोई नोएडा में, Yes, हाँ, डेटा डजंट सपोर्ट दिस। वो एक वो मेंटल ब्लॉक कह दें कि भाई यूपी इज सेफर देन गुड़गांव, तो ऐसा नहीं है। गुड़गांव right, had its share of crime. right, right. So ये तो एक बेसिक कंपैरिजन हो गया। इसके हिसाब से तो मतलब I mean, if somebody is not looking for uh, employment opportunities, then Noida right now comes out to be kind of a winner. नहीं, बट But शहर तो बसते ही, नए नए शहर बसते ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से। right, अगेन so आई एम नॉट as गुड़गांव इज okay, I am not making a case that Gurgaon is better than Noida. There are two aspects if we compare on them. Infrastructure, Noida wins. Employment opportunities, Gurgaon has happened. right, okay, but are there any uh, difference, technical or structural differences in these two places in real, or at the policy level? There is a huge technical difference at the policy level, sir. Gurgaon में, except for मानेसर में जो पीछे एक दो बार कुछ हुआ था उसको छोड़ दें, तो land is completely purchased from the market. The, From the, the from the market. What the development authority does is very simple. They do a master planning and zoning of the city. So Gurgaon will have a zone that this is a residential zone, this is a sector here, and after that, if I am a developer, I have to go to the open market, purchase the land from the existing landowners. In Noida, it is the government which goes, and so government sets up a legal authority. Let's say it is Noida is a legal authority, New Okhla Industrial Development Authority. Similarly, you have a Greater Noida Authority, which is Greater New Okhla Industrial Development Authority. Now they have made something for the Yamuna Expressway Industrial Development. YIDA is what they call it. Yamuna Expressway. So government goes, it takes over the land, pays a compensation to the farmer, changes the land usage for the entire city, for the entire planned development, and then invites buyers, which are developers or can be any entity who meet the given norms, for taking that land on a 99-year lease. So the allotment is done by the authority there of the land itself. That is why, so the source of land in Gurgaon is market. Source of land for a developer in Noida, Greater Noida, Wida is the development authority. Therefore, if you see नोएडा के जो प्लॉट साइजेस भी होते हैं वो बहुत यूनिफॉर्म है, साइज ऑफ द प्लॉट्स। इट्स लाइक इफ यू गो टू मानेसर, तो वहां पर जो है इंडस्ट्रियल लैंड जिस तरह से रेक्टेंगुलर स्क्वायरिश है, उसी तरह से आपको नोएडा के डेवलपमेंट में ये ज्यादा बेटर पैटर्न्स मिलेंगे कि उनके रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं, लाइक इफ यू गो टू द्वारका, देयर आल्सो यू विल फाइंड, because the land has been handed over by DDA even to CGHS. So the residential plots are also more rectangular. They are more systematic. The road infra is more systematic. On the other hand, आप गुड़गांव में देखेंगे तो एक ओवल शेप का भी रेजिडेंशियल यूनिट आपको मिल जाएगा। मतलब when I say 30 acre of development by a developer, which is not exactly a rectangle or a square divided into three areas and things like that. All this is because of the simple fact that Gurgaon land consolidation is individually done by the builder. Noida, it is first the land is taken over by the development authority, master planned and reallotted to people who want to develop that through open draws. So that's the basic difference. Is there a in terms of coverage of area and उसके उसमें भी कोई difference है क्या? तो सर देखिए, मतलब कवरेज ऑफ एरिया और यही तो सारा फर्क है। किसी टाइम में जब which lot of investors did not actually get into in terms of when they were making that investment 7-8 years ago. Cost of construction is at par. ऐसा तो हो नहीं सकता है कि गुड़गांव में आप घर बना रहे हैं तो आपको वो 200 रुपए का बनेगा और नोएडा में बना रहे हैं तो 100 रुपए का। If I'm creating the same kind of
product, my cost would be nearly the same because builder भी तो market से input ले रहा है, उसकी input cost same है. Other inputs are also same. Hiring an architect in Noida, only Gurgaon is going to cost me the same. FAR का पहला फर्क, गुड़गांव की FAR, अभी इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में FAR बढ़ा करके 2.25 करी. पहले FAR was 1.75 in Gurgaon for group housing societies. वही FAR नोएडा में was 2.75. Oh, So if I had 1 acre of land in Gurgaon, I could construct 1.75, which was approximately 76,000 square feet of build-up area. On the other hand, in Noida, I could do 2.75, which was approximately 1.2 lakh square feet of build-up area. लेकिन डिफरेंस यही खत्म नहीं हुआ. गुड़गांव के डेंसिटी नॉर्म्स वर 250 to 300 people per acre, wherein one dwelling unit is supposed to have around 5 people. So मैं गुड़गांव में ये 76,000 स्क्वायर फीट को लगभग 50 dwelling units में बना सकता था in 1 acre. So if I have a 10 acre plot, there will be approximately 500 dwelling units with, let's say, 5 lakh square feet. नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको बाद नोएडा एक्सटेंशन करके मार्केट किया गया, वहां पर डेंसिटी नॉर्म्स और 1500 to 1600 people per acre. oh, So implication was that Gurgaon में I could go up till 50-60 units per acre. Noida में I could go up to 300 units per acre, 300 to 320 units per acre. So in Noida I had more FAR. In Noida I had more units per acre. Therefore, the average size of a dwelling unit in Gurgaon, which I could achieve as a developer, was 1300 1320 square feet. In Noida, average size was 375 square feet. So if my input costs were same, let's say the cost of land and the cost of construction was same, still because I was able to divide my cost of land multiple times by 60 compared to 300, यहाँ मैं 60 घर बना पा रहा हूँ और वहां में 300 घर बना पा रहा हूँ. सो अगर मुझे यहाँ पर पर स्क्वायर फीट लैंड 1000 रुपए की पड़ती है, तो नोएडा में वही पर स्क्वायर फीट लैंड मुझे 200 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रही है. So if my cost of construction was 1500 rupees square feet, the input cost to me in terms of producing an apartment in Noida was 1500 plus 200 rupees. So what I was saying sir कि land cost को इतना easy हो गया था नोएडा में कि मेरे को per square feet cost I could divide it by 5 times when in Noida as compared to Gurgaon. So in spite of the same construction cost, because I could produce more units in the same area, I was able to offer more affordable housing or more affordable residential options in Noida. That doesn't mean Noida was cheap. More apt comparison would be an AC first class vis-a-vis Garib Rath. So that's where the difference lies. so is the perception that Gurgaon is premium? Is that justified? Is it really premium? हाँ सर, आपको उतने एक एरिया एक एकड़ में 50 यूनिट मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू एक एकड़ में 300 यूनिट मिल रहे हैं, तो आप प्रीमियम हो गए ना. आपके पास में रिसोर्सेज, देयर आर लेसर पीपल यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ दैट 1 acre. Yeah. So that means even in terms of if I am staying in a society in Gurgaon, then perforce at the policy level only the builder is supposed to leave some kind of open area, which is more in Gurgaon and lesser in Noida, right? बिकॉज आपको उतने यूनिट्स बनाने, प्लस क्या होगा, जैसे अभी आप गुड़गांव में जो स्टेइंग इन AWHO शीशपाल विहार, तो AWHO शीशपाल विहार हैज बीन डेवलप्ड एज पर द नॉर्म्स ऑफ गुड़गांव बिल्डिंग प्लान्स. देयरफॉर वहां पर एवरेज अप्रॉक्स देयर आर अराउंड 50 यूनिट्स पर एकड़.
with an average dwelling unit size of 1300 square feet. So average dwelling unit size 1300 square feet का मतलब है अगर कोई यूनिट उससे छोटा है तो उतना ही वहां पर दूसरे यूनिट को एक्स्ट्रा दिया गया है टू अचीव द सेम. If one unit is, let's say, 1100 square feet, then another unit would be 1500 square feet. That's how it has been. The total available square footage has been divided among those 50 units. Imagine now, instead of 50 units, there were 300 units per acre. So, utni Right. zyada parking, utne ही zyada apartments. So, it would have been a much more dense development, Right. which would have brought the cost down naturally, Of because मैं course. land cost को उतना divide कर पाया. Right. So people, I mean, it's a very confusing this thing. I have stayed in Noida also, and I have stayed in Gurgaon also. I'm staying in Gurgaon, and I have stayed in Noida for quite some time when I was in service, and then thereafter also. So, and you have rightly brought out the infrastructure wise, it is quite okay, quite good, in fact, compared to Gurgaon. But then what went wrong with Noida? अब नोएडा में एक और बड़ी मजेदार बात हुई सर, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड़गांव में लैंड खरीदते हुए मुझे मार्केट से खरीदना पड़ता है. So let's say you are a landowner in Gurgaon, I come to you, we reach an agreement. Whatever may be the mode of payment I make to you, when you are going to get an approval from the government, the land has been paid for. Whether I have paid you upfront, मैंने आपसे 10 एकड़ खरीदा और हर एकड़ के 10 करोड़ के हिसाब से आपको 100 करोड़ रुपए दिए, या मैं और आप एक जॉइंट एग्रीमेंट में चले गए wherein you are co-owner of the project and let's say you have 40% or 30% of the project, but to a third party which is a retail buyer, उसकी लैंड पेड फॉर होती है गुड़गांव के अंदर, लैंड की तरफ ड्यूज नहीं होते. ऑन द अदर हैंड इन 2010, 11, 12, 13 नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया, आप बिल्डर हैं, आप ये पार्टिसिपेटेड इन अ ड्रॉ ऑफ लॉट्स, you have bid for a particular piece of land and let's say the land cost was 100 crores. So they said ठीक है आप एक काम करो 10% अभी दे दो और बचा हुआ 90% अगले 10 साल में दे दो. Right. So उस पे obviously they charge an interest, we will charge you interest, but what you have practically done is, let's say I am a builder who wants to get a product worth 200 crore का मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें से मेरी लैंड कॉस्ट थी लेट्स से 80 CR, मैंने आज 8 करोड़ रुपया दिया और मुझे फुली लाइसेंस अप्रूव्ड लैंड मिल गई. मैं उस अलॉटमेंट के बेसिस पे बैंक पे गया, मैंने बैंक से बैंक फंडिंग करा लिया कि अगर कोई मैं इस पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो a retail buyer can come take loan from this bank and the bank will pay me for construction of the project. Now I needed 100 CR to construct the project. अभी मेरे को 90 करोड़ सरकार का देना था towards cost of the land. And I started collecting money. Because I had approved land, I got approval from the bank to raise home loans on the project. तो मैंने 8 करोड़ लेकर के 200 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया या एटलीस्ट लॉन्च कर दिया. और मैंने पहले जब लॉन्च किया तो मैंने बायर से 20% का कलेक्शन कर लिया ऑन अ प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ 20 करोड़. तो मेरे पास में विद इन 6 months आई गॉट एन अमाउंट ऑफ 35-40 CR. और उससे अब मैं अपनी लाइबिलिटीज को सेटल ऑफ करने की जगह मैं दूसरे ड्रॉ में गया और मैंने वहां पर भी जाकर के एक और 8 करोड़, बस लैंड का तो मुझे 10% देना था, उसके बाद मेरे पास 10 साल का टाइम, मार्केट में उछाल था, हर कोई खरीद रहा था. एंड दैट्स हाउ द अमरपाली एंड सुपरटेक एंड ऑल दे बिकेम वेरी बिग लैंड ओनर्स wherein they are not paid off the liabilities of that land. So what went wrong was government, or rather to say, I'll not say government, the authority financed the land allotment to the builders. And this fact was not exactly known to the buyers. और बैंक्स ने भी उस वक्त में ध्यान नहीं दिया कि ठीक है भाई आपका लोन होता है, आपकी लोन बुक बन गई है, यू आर एबल टू शो टू योर शेयर होल्डर्स दैट वी हैव एसेट्स. और वो होम लोन्स डिसबर्स होने शुरू हो गए एक तरफ एंड पूरा मार्केट
में ब्रोकर्स एंड शोर और आप नोएडा में खरीद दो और बस ये तो नेक्स्ट यहीं पर वेल्थ क्रिएशन एंड ऑल दैट एंड सो लॉट ऑफ सेल्स हैपन वेर इन अगर 200 करोड़ के प्रोजेक्ट में जनरली बनाता बिल्डर का 20-30 करोड़ का प्रॉफिट होता 5 साल में जाकर के वो प्रॉफिट उसने पहले आउट कर लिया लैंड बैंक्स बना लिए एंड रिटेल बायर्स को जो मिलना चाहिए था फुली पेड फॉर लैंड एंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वो उसे मिल रही है बिकॉज वो आगे से आगे सिर्फ लैंड बैंक्स क्रिएट होते हैं सो व्हाट Right. एक्चुअली हैपेंड रॉन्ग इन नोएडा वाज गिविंग लैंड एट वेरी वेरी favorable rather to say a policy which was designed in coordination with the builders to facilitate Right. it was kind of I would say मतलब ले लो जी आप जमीन ले लो और कर लो आपको जो करना Okay. So that was the, and that is why I mean there were so many land. I mean builder defaulting in Noida at one point of time. There was JP City, then Amrapali, then others also. So तो अभी अब पूरा so today I यूटर्न have come to know what happened actually. अब पूरा यूटर्न हो गया अब बोलते हैं नोएडा अथॉरिटी बोलती है अब आप 90 दिन में पेमेंट करो लैंड का Okay. सो नाउ दे हैव चेंज द पॉलिसी ऑल टुगेदर नाउ इट इज यू आर अ बिल्डर यू वांट टू बाय लैंड फ्रॉम अस एक तो आप लैंड मुझसे ही ले सकते हो एंड नाउ यू नीड टू पे द एंटायर ड्यूज इन 90 days अपफ्रंट कैश अब अथॉरिटी में मैं आपके चक्कर नहीं लगाऊंगा फॉर कलेक्टिंग माय मनी बिकॉज ये जितना भी अब लैंड का अनपेड ड्यू है ये सरकार की बुक्स में अनपेड हो गया ना सर Right. एंड गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पेड टू दी लैंड ओनर जिनसे उन्होंने एक्वायर किया फार्मर्स वगैरह को सेटल कर चुके Right. सो अभी पॉलिसी इज वेरी क्लियर So so if this was what was ailing Noida, was Gurgaon any better? I mean, what went wrong with Gurgaon? Because nothing. Gurgaon was also कोई दूध का धुला हुआ नहीं था. नहीं. गुड़गांव में क्या हुआ सर गुड़गांव में एक तो हैफाजार्ड डेवलपमेंट हुआ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ दूसरा गुड़गांव बिल्डर्स ने सरकार के डेवलपमेंट ईडीसी आईडीसी चार्जेस जिसको बोलते हैं उस पे और Right. गवर्नमेंट के टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज वगैरह उन पे डिफॉल्ट किया पैसा कलेक्ट किया बाहर से तो ले लिया लेकिन उसको आगे गवर्नमेंट को नहीं दिया बट पोस्ट Okay. रेरा एंड सरकार हैज आल्सो मेड सम चेंजेस इन दिस गवर्नमेंट ने अपनी कलेक्शन पॉलिसीज को चेंज किया है रेरा की वजह से ये चेंजेस होंगे बट डेवलपमेंट का जो पैटर्न है गुड़गांव में वो थोड़ा सा अभी भी हैफाजार्ड रहेगा फॉर अ वेरी सिंपल रीजन लैंड की जो परचेज है बिल्डर के लिए वो अभी भी मार्केट इट इज फ्रॉम द मार्केट ऑल्दो Okay. हाउसिंग पॉलिसी में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी लाने की वजह से जो अफोर्डेबल सेगमेंट है वो भी गुड़गांव में अब अवेलेबल है सो इट इज प्रीमियम सेगमेंट अफोर्डेबल सेगमेंट सो देन गवर्नमेंट केम आउट विद दीनदयाल जन आवास योजना आल्सो सो ऑप्शनैलिटी गुड़गांव में भी बढ़ गई है गुड़गांव इज नो मोर नाउ जस्ट only 1 CR and above kind of housing development but गवर्नमेंट के ड्यूज में यहाँ भी डिफॉल्ट हुआ ईडीसी आईडीसी और electricity dues है but if I talk in terms of percentage let's say if in Noida my liabilities were 100 then my default was 40% if in Gurgaon my liabilities were 100 my default was 10% Okay. so that is where the difference was बाकी लेकिन डेवलपमेंट का पैटर्न हैफाजार्ड है गुड़गांव में और इंफ्रा ग्रोथ was poor in Gurgaon I mean, it is really appalling to. It's a. It's very sad to see that Gurgaon generating so much of revenue, and I mean actually there is no metro. Wherever metro is, it's of no use. People have to go spend 30 minutes, 40 minutes to reach a metro station. So anyway, so which is better? I mean, as far as appreciation, investment point of view, which is better than from and also in all the segments. I mean, मैं premium. आपको मैं I'll give you the advantages first which Noida had
Noida in next 10, 12 years has better development infrastructure wise. The green cover is more, and अभी जो नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि लैंड कॉस्ट वगैरह पेड है ना, तो वहां भी प्राइसेस काफी ज्यादा हैं, बट अदरवाइज इट इज कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव. दैट इज द एडवांटेज ऑफ नोएडा. गुड़गांव का एडवांटेज है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड जो रेगुलर हाउसिंग यूनिट्स हैं वहां पर डेंसिटी डेवलपमेंट, डेंसिटी पर स्क्वायर सॉरी पर एकड़ इज लेसर एज कंपेयर टू नोएडा. दैट इज द एडवांटेज ऑफ गुड़गांव. Where to buy? If that is the question, first it should be near to my place of work. If I am working in Gurgaon, I should try and buy a unit in Gurgaon. And now there are But options available. but You know, Vipul, are we talking about for own residence or are we talking for investment point of view? for sir, what is true for own residents should broadly be true for own from investment point of view also. But अगर खुद के रहने के लिए खरीदना है तो मेरे काम की जगह से मुझे पास, और गुड़गांव में भी अब वो ऑप्शंस हैं. You have affordable housing and mid segment वाला भी options available होंगे. Most important when you are buying a property, whether in Gurgaon or Noida, is one should ensure the financial closure of the project. When I say financial closure implies कि बिल्डर ने अपने ड्यूज पे कर दिए. अदरवाइज आप बिल्डर को दे देंगे, बिल्डर ने अपनी लाइबिलिटी सेटल ही नहीं करी है, तो यू हैव पेड बट यू आर स्टिल काइंड ऑफ लाइबल फॉर द बैलेंस ऑफ द पेमेंट. थर्ड, वो वेरेवर रिटेल इन्वेस्टर को कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगता है सर, अब तो रेरा आ गया, आप आराम से अपनी खोजबीन कीजिए, या बैंक के थ्रू पता लगता है. और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि किसने कहाँ पेमेंट नहीं किया. ओके. हाँ, जो इनके डिफॉल्टर होते हैं सबकी लिस्ट होती है, ये बिल्डर, ये प्रोजेक्ट, ये सब. देखिए, ड्यू डिलिजेंस, समझदारी, अपनी तरह से मेहनत करना, ये तो बायर को करना पड़ेगा. थर्ड, wherever you are buying, one has to understand कि FAR और डेंसिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट की कॉस्ट को समझते हुए मैं क्या फेयर प्राइस पे खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ. अगर मैं फेयर प्राइस पे नहीं खरीदूंगा तो मैं नोएडा में भी खरीद के नुकसान उठाऊंगा, और नहीं होगा तो गुड़गांव में भी मतलब फेयर प्राइस पे गुड़गांव में भी फायदा होगा. सो प्राइस डिटर्मिनेशन शुड बी डन वेरी डिलिजेंट. लास्टली सर, एक ना मतलब it is not a recommendation, but I've seen there is a regional preference exists. Gurgaon is more preferred by people from Haryana and Rajasthan because of the fact that it kind of, entry to Delhi from that side. Right. And Noida has a regional preference of Uttar Pradesh and people from the eastern side, Bihar and Uttarakhand, because they enter into NCR from that side. So वो रीजनल प्रेफरेंसेस हैं, अगर किसी की रीजनल प्रेफरेंसेस हैं, सो दे कैन टेक केयर ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई वांट, वेयर आई वांट टू बाय. No, from appreciation point of view, considering that Zevar Airport is also coming up and all those things. जेवर एयरपोर्ट आएगा सर, वो ऑलरेडी मार्केट अपने की उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है उसको. इट इज लाइक दिस, आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी एन IITian, सो मैंने ऑलरेडी अपने सैलरी के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया कि मैं तो अब इतनी सैलरी लूंगा बिकॉज मैं तो IIT से पास आउट होगा. सो वो प्राइसेस में एब्जॉर्ब हो जाए. So one has to be very clear as to what is the fair price at which the purchase is being made. That fair price determination is important. So again, question is, मैं छोड़ूंगा नहीं. Appreciation point of view, sir. सर एप्रिसिएशन इतनी बड़ी लोकेशन के हिसाब से एप्रिसिएशन कर पाना इज लाइक क्रिएटिंग अ नैरेटिव वेयर प्रॉब्ली माय वेस्टेड इंटरेस्ट इज कि अगर आज मैं गुड़गांव बेच रहा हूँ तो आई क्रिएट अ नैरेटिव कि गुड़गांव खरीद लो, कल नोएडा बेच रहा हूँ तो इट वुड डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. So your this thing is the buyer should do due diligence. उसके वर्क प्लेस के हिसाब से उसकी बाकी उसको क्या मिल रहा है, हाउ मच ऑफ स्पेस, हाउ मच ऑफ कवरेज एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ड्यू डिलिजेंस करके बिल्डर की वो चेक, क्रेडेंशियल्स चेक करके, उसकी फाइनेंशियल स्टेट चेक करके, देन ही शुड कंपेयर कि वेयर ही वांट्स टू बाय. So a good project in Noida as well as a good project in Gurgaon both have appreciation scope.
right? That's what you are actually telling. Both have appreciation scope. Both the areas projects have appreciated in the past. ऐसा नहीं है कि नोएडा में प्रोजेक्ट्स में एप्रिसिएशन नहीं है, वहां भी ठीक ठाक से एप्रिसिएशन है जिसने ढंग का इन्वेस्टमेंट किया है. So I am saying, sir, if I'm creating a narrative that Gurgaon is better than Noida, that means I have an interest somewhere, and reverse is also true. The fact is that it depends on the project where you are making it. Right, right. So You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.